नमस्कार, मैं पलक पराशर आप सभी का स्वागत करती हूँ पेटोफिया 2025 में। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से पेट एनिमल्स आए हुए हैं, किस तरीके से डॉक्टर्स उनका कैसे ख्याल रखते हैं। यहाँ पे तरह तरह के इवेंट्स होंगे पेट एनिमल्स के लिए और यहाँ पे देश विदेश से डॉक्टर आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं कि पेट एनिमल्स को कैसे रखा जाता है, कैसे क्या कर सकते हैं। स्ट्रे डॉग्स के लिए उन्होंने अभी तक क्या किया है, आइए देखते हैं। तो कुछ ब्रीफ इंट्रो बताएंगे। ये PAWS Learning Research Council of India, we are working for upliftment of veterinarians in our country and animal welfare throughout the country and South Asian countries. और इसके अंडर हम लोग CE प्रोग्राम करते हैं, कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम है जो एक डॉक्टर्स के लिए होता है, उनकी स्किल को थोड़ा और एम्पावर करने के लिए, थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए और उनके जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो सारे वर्ल्ड में हो रही हैं वो टेक्निक्स हमारे इंडिया में भी हमारे क्लिनिशियन जो है उनके क्लिनिक्स में भी वो होना चाहिए। वो क्वालिटी केयर जो सारे वर्ल्ड में मिलता है वो हमारे यहाँ डॉग्स को, हमारे पेट्स को इंडिया में भी मिलना चाहिए, जो कि हमारा एक विकसित भारत का 2047 का एक मिशन है। उसमें हम लोगों को अपने कंपेनियन एनिमल्स की क्वालिटी केयर उतना ही होना चाहिए जो सारे वर्ल्ड ओवर होता है। तो अंडर दिस वी आर डूइंग दिस CE प्रोग्राम टू अपग्रेड आवर नॉलेज। और उसमें ये डॉक्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, थोड़ा सा साउथ एशियन कंट्री से भी आते हैं। उसमें स्पीकर्स हैं लाइक दिस टाइम हमारा ऑर्थोपेडिक एक टॉपिक है जो मेन, जैसे बोन में पिनिंग होता है, फ्रैक्चर होता है, तो उसमें लाइक क्या टेक्निक्स लेटेस्ट हैं, कैसे उसको क्योर करते हैं या सर्जरीज कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास UK से डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर पैडन, एंड साथ में हमारे इंडिया के लीडिंग डॉक्टर्स हैं जो आप लेटेस्ट टेक्निक्स हमारे डॉक्टर्स को बता रहे हैं। तो ये 3 दिन का प्रोग्राम होता है। इसमें हम लोगों ने इस टाइम पे इंडियन पेटोफिया एक कार्निवल ऐड किया है जिसमें डॉग्स भी आते हैं, पेट ऑनर्स भी आते हैं। उसमें फैशन शोज हैं, जर्मन शेफर्ड स्पेशलिटी शो है, ऑल ब्रीड शोज होते हैं। और एक दिस इज टू ऐड लिटिल मोर काइंड ऑफ अवेयरनेस एंड कंपैशन फॉर द एनिमल। तो इसमें बहुत से लोग आए, बहुत से पेट ओनर्स आए, तो बाहर हमारा वो चल रहा है। तो ये लगातार 3 दिन चलेगा। इसमें ग्रूमिंग कंपटीशन भी है। तो ये सब चीज़ें अगर हम ये रेगुलरली करते रहते हैं तो आई थिंक और पेट ओनर्स भी इनकरेज होते हैं टू अडॉप्ट आवर होमलेस डॉग्स जो सड़कों में रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है। हम लोग प्रमोट करते हैं कि वो उनको भी एक घर मिलना चाहिए और उसको देख के बहुत लोग रख भी रहे हैं और बाहर भी उनको ट्रीट कर रहे हैं। So since how long you have been working for the same? ये हमारा जो NGOs है वो तो वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 20 years, बट दिस अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज फॉर द डॉक्टर्स वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 years. Okay sir, I am Palak and my question is how does PLRC engage with the guest owners? Like how? Sorry, come again? How does PLRC engage with the guest owners, like pet animals owners? Owners. Yeah. We call them pet parents. Okay. Right. See, basically everybody who's here is a practicing vet, maybe in his own hospital or in the clinic. And the rapport between a owner and veterinary is just like a family doctor. There is no more that just like human beings, you cannot call your doctor at 2 o'clock in the night. But our pet parents, we receive calls and we give the answers in the dead of the night also. And our emergencies are open all the time. So the rapport between parent, because the dog or cat, whatever they have, is this like their child. So the friendliness, the compassion they have for their pets just is passed on to us, and the veterinary takes good care of this, and we are proud of this that we are very good in this. The rapport is good, just like a family doctor. Thank you. And my second question is, what are the awareness anyone should have when in PLRC? Like, what are the awareness you want to? Awareness as in, when the event is going on. Awareness, जो fresh graduates जो उनके लिए awareness regarding the latest techniques, so that is going to be there, that is going to be taught by various people and lecturers. And इसमें बीच में कई बारी pet parents के लिए भी 1-2 sessions हम रखते हैं. Like what kind of sessions? Like what? For example, लास्ट ईयर हमने जो रखा था एक सेशन वो कार्डियक डिजीजेस पे था। बहुत सारे पेट पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि अगर इस टाइप के सिम्टम्स हैं तो वो एक प्रोबेबल हार्ट कंडीशन हो सकती है उनके पेट के अंदर।
तो अगर उस टाइप के सिम्टम्स वो सिम्टम्स को हम एक्सप्लेन करते हैं एंड वी क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग दोज सिम्टम्स सो दैट इफ दोज सिम्टम्स आर देयर दे कैन गेट द टेस्ट डन एंड उससे अर्ली डायग्नोसिस मिल सकती है और बचाव हो सकता है बीमारी। And what are the missions and vision regarding the PLRC? Mission and vision. Vision in the future. See, mission, we are already explained, Dr. Sharma was very explicit on this. See, it's not easy. Normal man does not understand a blood, a dog can have blood infections, can dog have viral infections just like human beings. A dog can get drips. लोगों को पता नहीं होता कि उसको ग्लूकोज भी चढ़ता है, लोगों को ये नहीं पता होता। जैसे अभी हम लोग ब्लड बैंक स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होता है डॉग्स में, तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। और आपका MRI, CT स्कैन, ये सब हो रहा है। हम पुराने ज़माने में सिर्फ एक्सरे करते थे और उससे वेटनरी और ब्लड टेस्ट होते थे और डायग्नोसिस होता था, हम प्रोसीड करते थे। अब क्या है कि हम लोग MRI, CT स्कैन तक चले गए हैं और हमारे पेट्स को ये सर्विसेज मिल रही है और बहुत सारी जानें हम बचा सकेंगे। जरूरी नहीं है कि जान से जाने वाली बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां हड्डियों की, जैसा हम डिस्कशन चल रहा है, जो हमें नॉर्मल एक्सरे में हड्डियों की तकलीफें नजर नहीं आती, जो हमारे CT स्कैन से नजर आती है, फिर उनको सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है। ये चीज़ें हम कर रहे हैं, तो ये समय के साथ और बढ़ता जाएगा। और जो इंटरनेशनल होगा, हम तो चाहते हैं कि जो हम सर्जरी जैसे डॉक्टर कुणाल करते हैं, जो सर्जरीज ऑर्थोपेडिक की डॉक्टर वेंकटेश करते हैं, ये जो सर्जरीज है सस्ती हो। हम चाहते हैं कि बाहर के देश के लोग इंडिया आके इलाज करा के जाए, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और सस्ती पड़ेगी। थैंक यू। So, like, since you are doing a novel cause, are you getting some kind of appreciation from the pet parent? Would you like to share an example for the same? How you are giving back to the students or the faculty? Pet parents, you just give it. This one question is like how the faculty is giving back to the students. So, any appreciation that you received so far from the pet parent, and would you like to share an example for the same? Appreciation example, yeah, right. From the pet parent, right. because you are doing for the way this organization is performing, exactly. right? For the PAWS Learning and Research Council, right? So this has been the 5th year here, okay, and we've been doing this in a very, very stereotypic way, right? And there are no other organizations right away doing this kind of intensity. Now our major aim here is to go not only look at increasing the educational aspect of our veterinarians, we are also trying to put this message into our pet parents. So most often they are in nowadays with the media so well, and the whole world is in your palm. Now what happens is they look for opportunities to learn about certain important things that through the net and the web. And this is a forum where we try to show them that kind of a gratitude, try to bring whatever knowledge, minimum basic knowledge that a pet parent should have, right, from a professional point of view. So that we have been successfully doing for the last 5 years. And to motivate them also, we have a lot of pet-friendly events around here, not only professional learning here, but these things make this entire gathering more like a family. Okay, so we want to be, this is to be very, very honest. Human medicine is something different, animal medicine is different. Today we are all here, we are not only veterinarians, we are all pet parents. Right? So there is a bond, we understand how this bond translates there, and we ensure it translates in a wonderful way. Thank you. Sir, we are Indians, okay? तो एक्चुअली हमारे घर में ना ये जो पेट्स होते हैं, एक्चुअली मेरे घर में है नहीं तो मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, बट हम लोग इंडियन हैं, अगर हमें रास्ते में कोई डॉगी वगैरह दिख जाता है हम उसको वैसे ही मार देते हैं। तो आपको क्या लगता है इंडिया में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कितनी इफेक्टिव है और इसका आइडिया ही क्यों आया? इसका आइडिया आना इतना इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये अभी तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत से एनिमल फीडर्स हैं जो हमारे होमलेस डॉग्स हैं उनको फीड करते हैं, अपने घर का टाइम निकाल के अपने घर से अपना खाना देते हैं, और ऐसे हज़ारों लोग हैं यहाँ पे। तो वो जब फीड करते हैं तो लोगों को सेंसिटाइज करते हैं
जो एनिमल लवर है एटलीस्ट ही आल्सो हैज दैट कंपैशन, तो वो भी करने लगता है। जो डरते थे डॉग से, जो बहुत से लोगों को लगता है कि डॉग मतलब रेबीज़ है, ऐसा नहीं है। डॉग्स आर नॉट बॉर्न विद रेबीज़। तो ये ह्यूमन में एक मिथ है कि वो उसको काटेगा या स्क्रैच भी करेगा तो रेबीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एनिमल जो डॉग है हमारा, ये गॉड की दूसरी साइड है, GOD एंड GOD, so it's another side of the God. So वो कंपैशन भी उतना ही उसके साथ मिलता है, और वो स्ट्रेस बस्टर है। अगर किसी घर में जब बाहर वाले डॉग को भी आप खाना खिलाने लग जाएं, तो मुझे लगता है 5-6 दिन के बाद आपके बच्चे पास नहीं आएंगे, आप डॉग सबसे पहले आपके पास आएगा। तो जब आपका ऐसा ऐसी पर्सनालिटी होगी, आपके इतना ऑरा होगा जो कंपैशन से भरा हुआ है, तो मुझे लगता है वो इंसान इस सोसाइटी में उतना ही एक्सेप्टेबल होगा जो कि हेटर है। तो इसलिए हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि एवरीबडी शुड, ईच वन शुड कीप वन। तो वो घर के अंदर नहीं रख सकते तो घर के बाहर जरूर उसको रखें, और एक पानी का बर्तन घर के बाहर रख दें या एक छत के ऊपर रख दें, क्योंकि पानी आजकल इतना पोल्यूटेड है। हमारे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, पीक समर में उनको पानी पीने को नहीं मिलता, वो गंदी नालियों से पानी पीते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। तो अगर हर सिटीजन ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, तो मुझे लगता है हम लोग थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स एंड होमलेस पीपल, जो डॉग्स हैं, उनको हम लोग बचा सकते हैं और उनकी लाइफ लंबी कर सकते हैं। सर, इस चीज़ से रिलेटेड ना एक मिथ है, जैसे कि आपके डॉग हो गए, कैट हो गए, ये अगर रात में 2 बजे भी रोते हैं या 3 बजे भी रोते हैं, तो हमें ये लगता है या तो उन्होंने कोई भूत देखा है या कोई आत्मा देखी है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तो हमारे यहाँ सुपरस्टिशन बहुत है हमारे कंट्री की, ये बैड लक है। बट जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है ये विलेज में भी अब लोग समझने लग गए हैं कि ये सब मिथ होते हैं, और ये इसके ऊपर रीजन क्या है? एग्जैक्ट उसी टाइम पे हो इसका रीज़न नहीं है। ये जनरली कोई फीमेल डॉग हीट में होती है, तो देन दे स्टार्ट हाउलिंग। अगर वो पैक से निकल गया, जब पैक में नया डॉग कोई आ गया, दे स्टार्ट हाउलिंग। ऐसा नहीं है उनको कोई भूत नज़र आ रहा है, बट उनकी जो हियरिंग सेंसेशन है वो बहुत 30,000 टाइम्स बेटर मोर होती है हमारे ईयर से, तो उनको छोटी सी आवाज़ भी सुन जाती है। तो इसीलिए डॉग को बोलते हैं दे आर बेस्ट गार्ड डॉग। जो चौकीदार है वो भी एक डॉग अपने साथ ही रखता है। आपने कभी कॉलोनी में देखा होगा, चौकीदार जरूर 2-3 डॉग को खाना देता है, रखता है, बिकॉज वो चाहे सो जाएगा लेकिन उसका डॉग नहीं सोएगा, वो उसको अलार्म करता है। तो एक डॉग एक टेरिटरी से भाग करता है तो दूसरा दूसरी टेरिटरी से भाग करता है, तो अब इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है। वो शादियों में डीजे चलता है 2 बजे तक, 3 बजे तक, उससे परेशान नहीं होता। डॉग अगर भाग करता है तो वो परेशान हो जाता है। तो दैट मीन्स वी हैव टू सेंसिटाइज पीपल दैट दे आर इक्वल पार्ट ऑफ द इकोलॉजी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ योर मैसेज टू दोज पीपल जो कि महंगी ब्रीड्स बाय करते हैं रादर देन अडॉप्टिंग दोज ब्रीड्स? देखो, अगर मेरा मैसेज ये है, अगर आप सोच रहे हैं आपके बच्चों के साथ बैठ के कि आपको एक पप अडॉप्ट करना है, तो बेस्ट यही है कि आप अपने घर के आसपास देखें। बहुत सी ऐसी होमलेस डॉग्स हैं जिन्होंने बच्चे दिए हुए हैं। जब वो अब मदर से लाइक 2 महीना या 1.5 मंथ्स के हो जाते हैं, देन मदर स्टॉप गिविंग लैक्टेटिंग, तो उस टाइम पे यू कैन अडॉप्ट देम, कीप देम इन योर हाउस। बट लाने से पहले अपने डॉक्टर के पास, जो आसपास आपके लोकल वेट हैं, उनको ज़रूर दिखा दें कोई ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है, जैसे स्किन का होता है, जब कोई और इश्यूज तो नहीं है, तो वो एक वेट देख लेगा तो ही विल सर्टिफाई दिस इज फिट टू कीप एज ए पेट। और ये पेट जो है वो पेडिग्री वाले पेट से 1000 टाइम बेटर होता है, बिकॉज ये जो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड ब्रीड है, जो हमारे 1000 ईयर्स से हमारे यहाँ टेरिटरी में रह रहे हैं, दे आर मोर they are more sturdy and their DNA is more strong, जितना कि पेडिग्री डॉग का नहीं होता। तो इसलिए हमारे जो होमलेस डॉग्स हैं ये 20-25 साल तक जिंदा रहते हैं। तो उनका कंपैशन, उनका जो फ्रेंडशिप, उसका जो साथ है वो ज़्यादा देर तक रहता है। सर, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो पेट हैं सिर्फ उनके लिए या जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह उनके लिए, और उनके लिए स्पेशल से कुछ है क्या? नहीं, हमारे लिए हर डॉग एक क्रिएचर है, वो एक लिविंग चीज़ है, चाहे वो घर के बाहर रह रहा हो या घर के अंदर रह रहा हो। वो लग्जरी, वो इंसान है जो घर के बाहर भी सोते हैं लेकिन वो अपने बड़े महल में भी रहते हैं, है तो इंसान ही। तो वो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सबको एक ही जैसा हम लोग सोचते हैं, हमारे लिए तो वही है, चाहे वो होमलेस हो, चाहे किसी घर का बहुत बड़े रिच आदमी का पेशेंट हो, मीन डॉग हो, हमारे लिए एक ही तरह के पेशेंट होते हैं। हम उसको अपनी जितनी मैक्सिमम हमारी नॉलेज है उसके साथ ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। Sir, how do you see medical advancement shaping the future of healthcare? I just mentioned some time back the same thing I'm saying. Medical advancement
advancement is going, right from blood testing till MRI. That's what is happening in our country. And then especially with our society, PLRC, we are holding workshops across the country and abroad. Hands-on workshop का मतलब होता है कि we have a group of 40-50 doctors. All the doctors get a chance to upgrade their knowledge by touching the dog. तो कॉलेज में बुकिश नॉलेज थी वो तो थी, but to practice that in under the supervision of the supervisors and the specialist doctors वो बड़ा मुश्किल से मिलता है. So we are holding workshops across India and abroad, और हम हर तीसरे महीने में करते हैं, just to upgrade the way you think. So do you only confine to Delhi, or you are practicing this in other cities also? No, we are pan-Asia. We are doing it in Sri Lanka. We just finished something around 2 months back. We have been to Sri Lanka with an Barani Dharan, and Dr. Venkatesh, he is from Chennai. He is running a very big practice, and he is the president of the Association of Chennai. Thank you, sir, for the wonderful information and sharing the beautiful knowledge with us. Thank you so much. Thank you. नमस्कार, अभी हम एक PLRC के इवेंट में और यहाँ पे सबने अपने दवाई के स्टॉल्स लगा के रखे हैं, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि किस चीज़ के बारे में। हम लोग विमान कंपनी से हैं, हमारी कंपनी मुंबई बेस है और हम लोग पैट में मैम स्पेशल प्रोडक्ट लेके आते हैं। इनके प्रोडक्ट हैं हमारे अक्रॉस वर्ल्ड के, कुछ प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट कर रखे हैं, कुछ हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे GMP सर्टिफाइड प्लांट में बनाए जाते हैं। तो डॉग की वेरियस डिसीज़ के बारे में काफ़ी लोग फेस करता है कई प्रॉब्लम के लिए, जैसे हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है। तो उस सब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट रेंज है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, तो हमारे पास जॉइंट के प्रोडक्ट भी हैं, हमारे पास ओमेगा के प्रोडक्ट भी है, कैल्शियम के प्रोडक्ट भी है हमारे पास। कुछ डिसीज़ रहती है, कुछ डिवॉर्मिंग की प्रॉब्लम रहती है डॉग के अंदर, तो डिवॉर्मिंग टैबलेट्स हमारे पास रहती हैं। कुछ जॉइंट के प्रॉब्लम हमारे पास हैं, कुछ ट्रीट फॉर्म में प्रोडक्ट है हमारे पास, वैरायटी ऑफ रेंज है हमारे पास में। तो आप PLRC से कब से जुड़े हुए हैं? PLRC से हम ऑलमोस्ट हमें मैम 10-12 साल हो गए जुड़े हुए हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में। तो PLRC के साथ सभी इवेंट में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है, क्या ये मेडिसिन सभी खरीदी जा सकती है या क्या, मतलब इसके बारे में क्या है, मतलब ये किस चीज़ में, जैसे मैं देख सकते हैं सेट 10 सॉफ्ट चीज़ दिखा है, तो क्या चीज़? ये जिसमें वीकेयर वीक प्रोडक्ट आता है हमारा मैम, ये डायरी सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए, इसके अंदर कैरियन पैक्टिन होता है। तो डॉग को जब भी डायरिया होता है तो उसकी क्या है ना, उसके गट के अंदर जो बैक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट क्या है ना, गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है यहाँ पे। तो उसका डायरिया 3 डेज के अंदर कंट्रोल में आ जाता है मैम ये वाला। तो इस तरह से बहुत और भी वैरायटी प्रोडक्ट है हमारे पास। तो हर तरह की प्रॉब्लम जैसी होगी, इसकी प्रॉब्लम के हिसाब से प्रोडक्ट वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो क्या ये प्रोडक्ट जो है वो सारे के सारे डॉक्टर रिकमेंड्स हैं या फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि हम ऐसे नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं अपने पेट्स के लिए, डॉग्स के लिए? जनरली हम ये एडवाइस करते हैं, जो भी आप डॉग को प्रोडक्ट दे रहे हैं वो डॉग को जो भी रिक्वायरमेंट है वो पहले अपने वेट से कंसल्ट कीजिए। ये हमारे सारे प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल रहते हैं। हमारी एक्रोस इंडिया पूरी टीम है जो पूरी ऑल इंडिया मार्केटिंग करती है और सभी वेट से रेगुलर मिलती है, क्योंकि जो एक वेट होते हैं वो आपकी डॉग को पूरा उसको एग्जामिन करके पता लगा लेते हैं कि डॉग में क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पे। तो बेटर रहेगा आप फर्स्ट कंसल्ट विद योर डॉक्टर एंड देन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर यू विल यूज अवर प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। एंड मैं ये क्वेश्चन तो आपसे पूछना भूल ही गई, आप किस कंपनी से हैं, लाइक कौन सी कंपनी और कहाँ पे, कौन सी? माय नेम है विकास गुप्ता, वी आर फ्रॉम विमान कंपनी, विमान लाइफ एंड बेस्ड एट मुंबई। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलते हैं अगले स्टॉल की तरफ। तो हमारे साथ है जी, आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार पांडे। ओके, आप किस कंपनी से हैं और ये प्रोडक्ट क्या काम है? मैम एक्चुअली अपनी कंपनी का जो नाम है विको केयर प्राइवेट लिमिटेड, इट्स पुणे बेस्ड कंपनी एंड विको हैज सो मैनी प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, एशर्टी, स्पॉटॉन्स, पाउडर्स में अपने पास में आता है, शैम्पू रेंज आती है अपने पास में, कई सारे ईयर क्लीनर एंड हार्ट रिलेटेड, कार्डियक एंड सम लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये किस चीज़ में काम आती है, लाइक किस चीज़ में? मैम ऑल प्रोडक्ट्स इज वेटनरी कैनाइन डिवीजन प्रोडक्ट्स। सो एश्योरिटी प्लस स्पॉट ऑन, ये मैं अपना टिक्स एंड फ्लीज मतलब इंडो एक्टो बोथ पैरासाइट्स लाइक इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी पैरासाइट्स हैं उन पे वर्क करता है। मतलब दे आर डॉग मेडिसिन? यस मैम, डॉग, कैट एंड इक्वाइन प्रोडक्ट्स। Can you show some dog medicines and cat medicines too? This is a dog medicine, ma'am. Okay. He is Radicate 12% selenectin for dogs, and he is Radicate 6% for cats. Okay. And fleas, ear mites, and some like parasites. He is working. And आप PLRC से कब से जुड़े हुए हैं?
Ma'am, around of 18 years. 18 years? 8 years, sorry, 88 Okay, years. 8 years. 8 years. ओके, थैंक यू सो मच। आपका नाम? जितेंद्र नाम। जितेंद्र। तो ये जो प्रोडक्ट्स जो हम देख पा रहे हैं, ये किस बेस मतलब क्या यूज़ है इनका? मेन मैम सारे प्रोडक्ट्स हमारे ग्रूमिंग के लिए यहाँ पर ग्रूम मास्टर हमारा ब्रांड है, जिसमें आपको शैम्पूज वगैरह मिल जाएंगे, ट्रिमर्स मिल जाएंगे और सीजर्स वगैरह मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें हमारे पास मिल जाएंगी। ग्रूमिंग टेबल्स वगैरह हो, ड्रायर आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 मोटर, डबल मोटर, सिंगल मोटर ये मिल जाएंगी। तो ये सारे डॉग ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं? जी मैम, जी मैम। ओके, तो क्या आप एक दो प्रोडक्ट हमें दिखा सकते हैं हमारे कैमरा की? जी मैम, श्योर मैम, दिखा देता हूँ। ये मैम हमारे ट्रिपल मोटर में आपका ड्रायर आ जाता है, इसमें ट्रिपल मोटर है, पावरफुल होता है। अगर एक सिंगल मोटर अगर ख़राब हो जाती है, अगर सिंगल मोटर में लेते हैं ख़राब हो जाता है, तो ये लॉन्ग लाइफ होता है, मतलब ये उससे 3 गुना ज़्यादा चलेगा। इसके अलावा आप सीजर्स देख सकते हैं हमारे यहाँ पर। ये सीजर्स मिल जाएगी आपको। ओके, और तो इसके ये सारे डॉग ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं? जी डॉग के मेन यूज़ करते हैं। ओके, एंड मेरा आपसे ये भी सवाल है कि आप PLRC से कब से जुड़े हुए हैं, लाइक कितने साल हो गए आपको? मैम हमारी कंपनी को ऑलमोस्ट 20 साल के आसपास हो गए। 20 years? ओके, थैंक यू सो मच। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद है। मैं PLRC से आई थिंक जब से ये स्टार्ट हुआ था तब से ही जुड़ा हुआ हूँ, एंड आई एम रूटीन अटेंडी ऑफ डिफरेंट ट्रेनिंग्स अरेंज बाय PLRC. I know all of the team involved in PLRC, and we are basically always waiting for new event when they are going to plan any hands-on workshop for dogs, cats, and I am regular attendee. I hardly leave any training which is available hands-on. So how these events like are beneficial for the pet lovers, for the pet parents? What kind of knowledge they gain? Yes, as a veterinarian, see, you can't learn each and every technique in the college. You basically learn with time and you take different trainings. Earlier, what was the trend like 10 years before? There were no good speakers and hands-on training were available in India. So doctors tend to go outside, which was very costly. Now, organizations like PLRC are bringing foreign surgeons, foreign speakers to India and arranging such a beautiful programs and training sessions, which was very rare earlier. Now it is very feasible and accessible. We are getting lots of knowledge, and definitely if doctor is training themselves, every year we are attending 5-6 new trainings on new research work done. Definitely we will be able to practice well and we will be able to save more lives. So you are doing a great task because of people like you, the army people. They are like they're training the stray dogs and they're using them for the task. So yes, regarding I have seen on Insta also. So see, stray dogs have natural immunity and they have more natural instincts and they are more suited to our environment, Indian environment. Right. So definitely wherever they go, they can excel in those departments. Thank you. Okay, sir. Hello, my name is Palak, and my question is that what topics are covered in PLRC hand-to-hand program? Like, what are the topics and what are the consequences which are covered? So in this basically we are more learning about blood transfusion, anemia, different neurological issues, different orthopedic issues, arthritis, osteoarthritis, which is very common in dogs. Okay. And how is PLRC helping the dogs? Like, how does it help? How from where the fund comes? Okay, so PLRC is quite well-renowned organization. They are providing different learning platform to the veterinarians, and we are learning advanced techniques. They are also arranging hands-on technique, hands-on trainings for vets. So like dentistry, orthopedics, diagnostic imaging. They are arranging hands-on training that is improving quality of veterinary practice. Okay. And So is PLRC for only the like for the pet animals or for the stray dogs also? yes, it is. It is. They are also doing so much of charitable work. They are organizing basically pet shows to make awareness amongst the pet owners for how for better management and how they can take care of their pets in their homes. So definitely
they are not only working for vets, they are also working with the pet parents and providing them guidance and making them aware about good health practice for pets. Sir, but my question was, like, what about the stray dogs? PLRC is involved in stray dogs, so I don't have much knowledge about if PLRC is involving in rescuing stray dogs. I don't know about it. Okay, it's okay. Thank you so much. And my question is that how can people prevent or manage this condition in the PLRC? Which condition? Like the dog's condition, which we can see the medical issues of the dogs. So proper management is the first condition. Before starting from the disease, we can more work on a prophylactic basis. As a doctor, we also want to not just on prescribing medicine, we also work on a nutritional management and overall management of the pets. And people should be aware of the basic diseases, basic vaccination schedule, basic deworming schedule, basic care, basic nutritional management, basic water management, and overall the biosecurity measures or the safety measures they have to take for their pet. Okay, ma'am. Thank you so much. So I have a compassion for animals since I was very young, and that's why I want to be a vet. And this drives me to this field. Okay, thank you so much. They usually pump packed RBCs. You're talking about units. Okay, one individual will get at least 4 to 5 units of blood. You know how the system works there in human blood bank? How many of you have donated blood? Good, sizable number, man. Oh, okay. How many of you have voluntarily donated blood? Let us be very frank. Voluntary means none for your relatives or friends. Like they catch 4 or 5 people. You yourself volunteer and donate blood. How many people? That's good. That's really good. So what happens is your blood is actually centrifuged into components and it is being banked. Do you understand? It is not like your blood is directly given to the patient. Very seldom chances of in cardiac surgeries they use fresh blood, but mostly they use only components. So what happens is when you donate 1 unit of blood, that is 350 ml or 450 ml, it is being centrifuged into components and it is being stored into different components. So whatever the component the human being needs is being transfused. So by then they try to reduce reactions because the major reactions what we get from dog to dog transmission is through the teaming. Why do we get reactions? I mean, why does a dog get reactions? Yes? No, who is the major person who is responsible for the act? Yes, it is a fight between the antigen and the antibody. Okay. Now, Dr. Amar, what is your blood group? O positive. Sir? Okay, B positive. A1 positive. We'll leave Amar by the side. B positive and A1 positive. Like for his B positive blood, in the RBC, yesterday we saw the RBC, right? On the surface, there is the presence of the antigen. Okay. Now, the same person's plasma will have antibodies. Okay. Now, his blood, so please raise your hand, your B, correct. His blood will have antigens on the RBC surface. He will also have antibodies against. So likewise, A will have antibodies against. Okay, this is simple funda. So what happens is, during a mismatch means we don't know what we are giving, we give. During a mismatch, the donor's RBC will be fought by the recipient's antibody. Do you understand? So they virtually cause hemolysis. Most commonly, hemolytic reactions are, they succumb to something called acute renal tubular injuries in humans. Okay. Likewise, in dogs we have antigens which we are going to discuss later, of which something called the DEA 1.1 is our major enemy. So we need to figure out donors who lack this antigen of DEA 1.1. So
In veterinary practice, how many people have encountered trauma, road traffic accidents, then blood transfusion? That is a sizable number, because it's very rare. Why? No, why are we not getting enough road traffic accidents like humans? If you open up chat GPT, they will say what is the count of accidents today. Yeah, so some of them are already dead, some of them are half dead, but most of them have something called the sixth sense. Okay, you will be mesmerized to see a dog that actually crosses the pedestrian lane when there is green light. Please watch it. I am talking about normal stray dogs. Human beings run here and there. So that is one of the possibilities why we don't get major accident cases. So here this dog which was presented with the trauma, and this actually went in for something called a whole blood loss. So there you can see all the carotids and jewelers running away from each other, and if you actually see the dog's mentation, it's almost semi-comatose with severe anemia, but the breathing was stable. So fortunately we had emergency. We always have at least 2 to 3 bags of dog whole blood, whatever antigen it is okay to transfer for the first time to save the dog's life. You understand? So again other cases, so this dog was presented with HB of 2.8 and hematocrit of 12. A whole blank transfusion is absolutely necessary, there is no other go. And I have seen people wherein when the dog comes because of anemic hypoxia, there is no blood. So what is the initial thing we try to do? Hydrate the oxygen. Team A? IV fluids. There is a panda saying that if you give IV fluids, the blood will dilute and the dog will die. Right or wrong? Okay, there is something called hemodilution, but the bolus what we are giving is not sufficient, so you can go ahead. It's not going to kill the dog. And it is a very wrong practice to give oxygen. Can you believe it? Because the person who is necessary to take in the oxygen to the tissues is already not there. There is no fun in giving the oxygen because it will not reach the tissues. So, but as we have seen in a lot of movies, whenever there is an emergency case, we have to give a oxygen. Okay, whether the cylinder is working or not, whether half of the times I have seen in practice, including institutional practice, at an emergency there will be no bubbles. Have you seen that? What are bubbles? Flow meter, oxygen cylinder, B type, A type, C type, flow meter. When you switch the oxygen on, there will be bubbles. Yes, sir. Team A, why bubbles? Very good. It humidifies the oxygen. Why do you need to humidify oxygen? Remember, when you pump in 100% oxygen, okay, we encountered this very much during our corona pandemic, because there was a time when everybody wanted to buy oxygen left and right. Okay, so when these admitted patients were kept at oxygen continuously, third day they developed sores all over. Okay, that is because, yes, dryness. Oxygen is also a bad component there. You need to have a properly humidified flow meter. Okay. So this dog was presented with the other one amputee, and we gave 1 unit of blood and fine now. Now the major type of anemia what we see in practice is through hookworms. Okay. Very commonly you can see a puppy with pot belly, not eating properly, coming for vaccinations, blanched mucous membranes. So 100% it will be because of hookworms. So what are all the clinical signs we notice? In the double work review monitor.
So we see bloody diarrhea, dull coat, usually there is lustrous coat, and there are pale gums. Okay. Team B. I can hear some people saying, so that usually I was doing that in the class, everybody would have experienced that, because you don't know the answer, everybody just sings a song and nobody makes it. Okay? I was talking about hookworms. What is this? Simple. It is definitely one egg. Who is the pathologist sitting here? Somebody else is staying? No. Okay. Now it is very, very common in kittens. Most of the kittens, after you deworm, either they will vomit worms. Have you seen that? Yes, sir. It is called. I can see the last bench sleeping, so I have to walk there. Why do they vomit? Why do they vomit worms? Auto cleaning mode, huh? Okay, once you see the puppy vomiting worms, immediately you forget the puppy, you say the owner. So I usually prescribe albendazole without a problem, so it's no harm. Single tablet every 6 months the owners can have, because remember, as veterinarians we never deworm ourselves periodically. Forget the rabies vaccine. Deworming every 3 to 4 months once is very, very essential for us. This fellow can stick into you. Okay? See, some species are zoonotic. So diagnosis based on eggs, you see the double walled shell. Usually you should do a fecal flotation, or you can actually test antigen if you have a multi-specialty super corporate hospital. These are type of hookworms that you can see. Most commonly we use benzimetazoles. How many people use that? Fenbendazole, 5 to 10 milligram per kilo, 3 consecutive days. Remember that. You can combine with pyrantel. 50 milligram. What did I say? Yeah, 50 milligram. Sorry, I said 5. Yes. So, and most commonly, now the question goes to team A. We have a puppy. Puppy is called Tommy. It is a mongrel. It comes to you. You deworm the dog with pyrantel and fenbendazole. Next day the dog dies. Next day the puppy dies. Team A. Team A is this. Anaphylactic? How? The fees, huh? Fees shock is with the owner. Obstruction? Very good. Occlusion in the slight wrong answer. Thoda V. Intestine? Very good. It is a total intestinal blockage. Yeah. If you open up, you will see loads and loads of worms sitting there, alive. Okay. Now what is the best thing to do? Super. Give a laxative. Okay. Now the puppy gets something called seizures. Sir, last bench. The one with the WhatsApp. Arey, please call him here. Sir. Camera person. Hello. You all asked your question. Camera person. You do the camera person. So what? No. Trust me, the two people behind the camera are also meddling with the phones. Okay. Now the puppy gets seizure because of worms. Team B. What is that you give immediately aggressively? Venomous seizures? This answer is definitely worth a book. Okay, but I will give you a book on overall percentage. Anybody? So puppy practice is very important.
understand that. So I have the state-of-the-art dialysis machine, endoscopy machine at my clinic, but when the first puppy comes, I'll have to see the puppy. You know why? Why? Most common issues starting from DCM to deafness, blindness, dysplasia, whatever you can definitely give them a prognosis on the upper hand on the first visit. Okay? Likewise, you will have to be very strong on puppies because it is also a revenue. So whether you like dogs or not, you will have to kuchi kuchi. Hello, how are you? I hate that. But I don't have an option. I always tell my people, like, to be a vet, you not necessarily to be passionate about dogs and cats, correct? You need to know the science. It's an added value-added service. Okay? So I know a veterinarian in Chennai. Definitely, I'm not going to name him. So he gave, I guess, ivermectin to a cat, and instantly the cat died. Okay? You know, cat owners are crazy. Yesterday we discussed about that. You know what he did? Anybody? No, what does the vet do on the table? You don't have time to react much. It is instant shock. Some cats die of ivermectin. I don't know why. So, anybody? So this vet cried and wept over the body of the dead cat till the owner said, छोड़ दो जी। डॉग लवर्स के लिए गुड न्यूज है। देखिए, अगर आप डॉग लवर हैं तो आपको बता दूं कि 57th ब्रीड चैंपियनशिप डॉग शो होने वाला है 9th, 10th और 11th फरवरी को मानिक शाह ऑडिटोरियम सेंटर कैंट एरिया साइड। देखिए, न्यू दिल्ली में होगा ये जो इवेंट है और इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं PLRC यानी पेट लर्निंग एंड रिसर्च काउंसिल और इंडिया केनल लीग यानी IKL। देखिए, एक ओबीडियंस डॉग शो है जो 11th फरवरी यानी आज होगा। इस प्रोग्राम में डॉग लवर्स को न केवल अलग अलग ब्रीड्स के शानदार डॉग्स को देखने का मौका मिलेगा, बल्कि वो अपने पेट्स को भी डिफरेंट गेम से भी पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। इसके अलावा PA फ्री है। साथ ही एक अडॉप्शन कैंप भी होगा जहां आप उन डॉग्स को गोद ले सकते हैं जो बेघर हैं। तो जो डॉग ओनर हैं इस गेम में अपने डॉग्स को लाना चाहते हैं तो उनके लिए उन्हें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसकी जो लिंक है वो आप स्क्रीन पर तो देख ही रहे हैं। आपको बता दूं कि ये शो सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, बल्कि डॉग लवर्स के लिए एक फेस्टिवल होगा जहां डॉग ओनर्स अपने पेट को एंजॉय भी करा सकते हैं। साथ ही इस शो के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनका कहना है कि इस इवेंट में पेट्स की केयर कैसे की जाती है, उनकी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही उनके प्रति अवेयरनेस भी वहां पर मिलेगी। तो अब जो न्यू दिल्ली में रहते हैं उनके लिए, साथ ही जो डॉग लवर्स है उनके लिए ये जो शो है ना वो एकदम कमाल का है। तो बस आप तैयार हो जाइए।